The average marks of boys and girls in an examination are 75 and 80 respectively. If the marks of all the students in the examination are 78, find the ratio of number of boys to the rest of girls. So the average marks of boys are 75, that of girls are 80. We have given average marks of all the students as 78. So the ratio will be 3 and 2. 2 ratio 3. Correct answer is 2. The average temperature of a city for first 16 days of January is 22 degree Celsius, and the average temperature for last 16 days of the same month is 26 degree Celsius. The average temperature for the entire month is 24 degrees Celsius. What is the temperature on the 16th day? अब एवरेज से ये कितना कम है? 2 डिग्री कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 16 मल्टीप्लाई टू दैट इज 32 डिग्री कम है, और ये 2 डिग्री ज्यादा है। कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 16 में, दैट इज 32 डिग्री ज्यादा है। तो ओवरऑल देयर विल बी नो चेंज इन, सो 16 डे का टेम्परेचर क्या होगा? 24 डिग्री सेल्सियस। A stock portfolio consists of four stocks. Stock A represents 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represents 30% of the portfolio, has a return of 8%. Stock C represents 20% of the portfolio and has a return of 4%. And stock D represents 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. So what is the average return of the portfolio? So the total will be 180, 240, sorry. So the total return will be 120, 240, 80 and negative 150. Now cancelling this 120, 120 minus 30 to this 50. So it will be 290. So total return will be what? Divided by 100, which is 2.9%. What is the average of the squares of first 45 natural numbers? Now we know that the average of the squares of natural numbers is n plus 1, 2n plus 1 by 6. The average of squares of first 45 natural numbers is, we know that the sum of the squares of n natural numbers is n plus 1, 2n plus 1 by 6. So average will be what? Divided by n implies that n plus 1, which is 45 plus 1, 46, and 2n, that is 90 plus 1, 91 by 6. So now the thing is cancelling by 3 by 23, 91 into 23, that is 3, 27, 2, 18. So 0, 9, 3 and 2, 0, 9, 3 divided by 3, that is 6, 18, 2, 3, 9, ja, 27, again 2, 3, 7, ja, point 666, 97.67. A group of 30 students appeared in a test.
The average score of 12 students is 62 and of the rest that is 18 is 62. What is the average score of the group? Now we know that now we know that the average of the old students is 12 and the new students 18, remaining is also 62. Now we know that the average is same of all the students. Either it is initial 12 students or it is final 18 students. So there will be no change and no impact on the average. So average will be same, that is 62. Find the average of the prime numbers lying between 50 and 76. अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 53, 9, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 2, 73, 3, 4, 5, 6, है ना? And the sum is 10, 10, 4, this 10, this 10, 3, and 1, 4, 24, 2 carry, 14, 14, 6, 20, 26, 20, is 14, 20, 26, 28, 28 and 10 is 38. So 36 to 64. ये अगेन सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। ये भी सेम पैटर्न पे ही है। A class of 30 students appeared in a test. Average score of 12 students is 62 and of the rest that is 18 students is 72. Find the average score of the class. Now ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लेट करके किया करो, ताकि जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन से वैल्यू आए उसको टोटल स्टूडेंट या नंबर से डिवाइड किया और उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि लेट द एवरेज इन दोनों के बीच का 70, ठीक है? तो ये एवरेज से कितना कम है? 8, कितने में मल्टीप्लाई होगा? 12 में, दैट इज 96, कम है। ये 2 ज़्यादा है, तो कितने में मल्टीप्लाई होगा? कितने में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा? दैट इज 36। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू कितनी आ गई इसमें? 60 नेगेटिव। कितने में डिवाइड होगा? 30 में, दैट इज -2, यानी कि एवरेज कितना हो गया? 68। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन मेथड बेस्ट रहता है। अगेन सेम क्वेश्चन कर लोगे? नहीं ना? अगेन द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय हाफ kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student। तो लेट सपोज उनका एवरेज एक्स था 10 स्टूडेंट्स का। अब यहाँ से जो वापस से स्टूडेंट्स हो रहे हैं 10, पर इंक्रीज हो गया हाफ, तो हाफ के जी से इंक्रीज हो गया जब 51 केजी का कोई बंदा जो है उसने रिप्लेस कर दिया नए स्टूडेंट को। 51 केजी तो अपने साथ लाया ही लाया होगा, और ये हाफ के जी अगर 10 स्टूडेंट में डिवाइड डिवाइड हुआ है तो टोटल कितना फर्क आया? 5 का, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो उसका वेट कितना होगा? 56 केजी। Again, average of first 25 180. Again, find the average of, फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स। सम क्या होता है? n+1/2, है ना? एवरेज कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय n कर देंगे, ये कट गया, दैट इज 126/2, दैट इज 63। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 20 मैचेस।
If the average score of a batsman in 20 matches is 15 and in 25 other matches is 24, find the score in all 40 matches. 45 matches. Find the average score in all 45 matches. So 300, 625, 25 to 625 minus 1 that minus 25, that is 600, 900 divided by 45, that is 220. Again same time of question कर लोगे? Okay. A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and the rest, that is 18 students का average कितना है? 68. Find the average score of the class. Let's suppose average कितना था? 65. तो ये average से कितना कम है? 3 multiplied by 12, that is minus 36. ये average से कितना है? 3 ज़्यादा and multiplied by 18, that is 34. So 8 1 18 कितने में डिवाइड होगा? 30 में. 36 जा, that is 0.6 नेगेटिव में, बिकॉज यहाँ कितना था? पॉजिटिव में, सॉरी पॉजिटिव में. सो इट विल बी 65.6. Team of 7 members. The age of 6 of the members is 42. While the age of the 7th member is, क्या कह रहा है? While the age of the 7th member is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together. मतलब उनका सातों का एवरेज जो है लेट बी एक्स. तो 7 मेंबर की एज कितनी है? उनका एवरेज सातों का उससे 36 ज्यादा. फाइंड द एज ऑफ 7 मेंबर. सो वी नो दैट 7 मेंबर्स का एवरेज कितना है? एक्स. इनका सम कितना हो जाएगा? 7x. किसके इक्वल हो जाएगा? ये 6 है, उनका एवरेज 42 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 252. और जो ये 7 मेंबर है उसकी एज कितनी है? एक्स प्लस 36. तो 6x कितना हो जाएगा? 252 प्लस 36, दैट इज 8 8 एंड 2. सो 24 4 48. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48. दैट इज एवरेज ऑफ ऑल 7 मेंबर्स. बट इसने पूछा है उसकी एज कितनी है 7 मेंबर की. दैट इज एवरेज प्लस 36, दैट इज 14 84 इज द करेक्ट आंसर. Again, same time of question. A class of 30 students appeared in a test. Average score of 12 students is 62. Rest is 60. So find the average score. कर लोगे? Now again, average है तो squares of first 48 natural number. Same question. In the 8th class, ठीक है ये. In the 8th class containing 30 students, mathematics was taken. 10 students had an average score of 90 and the other 20 students had an average score of 75. Find the average of the whole class. Again, same. Let average be 80. है ना? Assumed average. Deviation निकाल लो. कितना आ रहा है? 10 ज्यादा. 10 मेंबर्स में डिवाइड हो गया, दैट इज 100. और ये 5 कम आ रहा है कितने में? 20 में डिवाइड हो गया, दैट इज माइनस 100. सो देयर विल नॉट चेंज. 80 विल बी द आंसर. Same question. This last question. In a class of 150 students, girls are 60 and okay, 60, 150 students. So there are 90 boys and 60 girls. These will be boys and these will be girls. The average weight of boys is 52 and girls is 48. Find the average weight. ये हो गया.
कर लो, उसको रेशियो को डिवाइड कर लो 3:2. सो नाउ x minus 48 upon 52 minus x is equals to 3/2. ये बॉयज की साइड, ये गर्ल्स की साइड है. 2x minus 60, 4 2 जा 96 is equals to minus 3x plus 3 2 जा 6, 5 3 जा 15. So 3x उधर गया, 5x और इधर ये भी पॉजिटिव हो गया, is equals to 156 plus 96 या 12, 10 और 15, 252. So x will be 5 5 या 25, 0 5 4 जा 50.4. Thank you.